1980 1980 letter of 1980 article 181 Absolutely, my lord. And यही contradiction है जो उस argument में है या उस point में है letter of 1980 article 181 Absolutely, my lord. And यही contradiction है जो उस argument में है या उस point में है letter of 1980 article 181 Sure, and यही contradiction है जो उस You argument say में है या उस point में 1956, है letter of 1980 article 181 but you say that the Supreme Court now, you say are letter the of broader set of 1980 article 181 but you say Please rephrase me, sir. Let me rephrase myself. What I said was that they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court. Let me rephrase my 7. What I said was they would be existing laws. They would be existing laws covered under Supreme Court.
Thank you.
and as it has, you have noticed, it has been used at various instances. In addition, as an act of parliament, and as term has specifically noticed, it act of parliament has been used various instances. We will look at the provision, and from the provision we'll cull out. In addition, as an act of parliament, and as term has specifically noticed, it act of parliament has been used various instances. We will look at the provision and referring to which source of law. In addition, as an act of parliament, and as term has specifically noticed, the act of parliament has been used. We will look at the provision and referring to which source of law. In addition, as an act of how it is and that is what I we will look at for the purposes of the commission is that an act of parliament as law cannot be I accept your argument. we will look at for the purposes Just an act of parliament, it has to be something an more. act of parliament So when you argue as on law the strength cannot that, be just look at your, I accept your argument because it cannot be just enough we will look to at swear forward and say last or just an act of parliament, it has to be something when it's just an act of when you argue there is a definite just look at your, I accept your argument because it cannot be just enough to swear forward and say then just why are you reading it has to be something when it's just an act of when you argue there is a definite just look at your, I accept your argument because it cannot be just enough to swear forward and say then just why are you reading it has to be something when it's just an act of when you argue there is a Power conferred on the Supreme Court by Article 191 is law, but the source of law in respect of the word used over there, that's the source of that law is not the rule-making power. That law, the source of that law according to you is an act of parliament. So that's the distinction that you draw, but you recognize, you accept that the rule-making power conferred by the Constitution on the Supreme Court also creates law. The source of that law, the rules, is the Supreme Court, but the source of the law, the word as used in the preceding part, the source of that law cannot be the rule-making power. It is somewhere else, wherever that may be, but it is so. Is that, have I understood? Yes, that's right. My Lord, if I may now address the second part of it, the second question, which my Lord... Forgotten the second question. You've forgotten the second question. No, I have the convention bit. The convention bit, because some interesting question had arisen. That was question number 1. As according to me, question number 2 was relating to 56 rules. Yeah. 56 rules I have already. जी जी वो इस सारी conversation के अंदर back and Now you are forth. back on, you are on the convention. ये 56 के रूल्स कौन से प्रोविजन के तहत बने थे कॉन्स्टिट्यूशन? My Lord, तो 56 के प्रेसिडेंट rules ने बनाए उस दी वक्त third प्रेसिडेंट schedule, hereby make the following third rules. schedule of 1956 constitution उस वक्त बने थे सर. हम नहीं मगर इसमें लिखा हुआ है रूल मेकिंग पावर्स विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. जी जो 1956 के रूल्स हैं. Because उस और ये वक्त जो 1980 के या 191 के तहत जी 191 के नीचे बने. उस वक्त 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल रिक्वायर्ड थी प्रेसिडेंट की. जो लास्ट रूल्स बने हैं वो 80 में बने हैं ना जी, हमारे. जी. तो इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटर हैज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर 43 इयर्स. ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, उन्होंने आपको कहा कि आप बनाते रहिए, ठीक बना रहे थे. अब उनको ख्याल आ गया ठीक बने हुए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक चलते रहे. अभी आके उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ी सी इंटरवेंशन की जरूरत आ गई है. मतलब आपका कहना ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सही चल रही थी तो उन्होंने चलने मैंने दिया. तो फर्स्ट हियरिंग पे आपको कहा था कि अगर ये 70,000 पे पेंडेंसी चली गई तो शायद एक और लॉ की जरूरत पड़ जाए. अगर ये 20,000 पे आ जाए तो वो कहेंगे बैक ऑफ, पीपल विल नॉट अप्रूव ऑफ इट. हमने 5 साल बाद लोगों के पास जाना होता है, लोग हमें अप्रूव लर्न काउंसिल जरा प्लीज आए ना अपने बिल को जरा देखें. वो रिकॉर्ड लाए हैं आप, जो कितने लोग थे, कितनी देर इसकी बहस हुई, कितने लोगों ने वो रिकॉर्ड पे आ गई नहीं है, वो वेबसाइट पे भी थी, वो मैंने वैसे प्रोवाइड कर दी थी. आप जब आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में एक बिल आया है. बिल के साथ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस उन्होंने दी हैं. जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में
shortcomings थी, let me be polite, shortcomings थी, exercise of discretion, exercise of jurisdiction, जिसके बेस पे आपने ये law introduce किया. So there is a statement of objects and reasons. जरा वो पढ़ लेंगे. My lord, bear with me. I'll read it for you. ये है, whereas the exercise of original jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 184 of the Constitution has been a subject of discussion by various forums with respect to invoking suo motu power, constitution of benches, and the absence of right of appeal. And it goes on. Now come to Section 2 of the Act. यानी आपका जो ग्रीवियंस था, चलें हम कह देते हैं, लेट्स टेक इट, चलें ठीक है, was suo motu and 184(3) कि उसमें अपील नहीं थी, jurisdiction एक्सरसाइज हो रही थी. अब आप आए ये 2 को देखें, पढ़े जरा आपने जो एक्ट में लाए हैं, पढ़ें. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court. यहाँ पे रुक जाएं. Why the overkill? Why? देखिए आपका जो कंसर्न था पार्लियामेंट के पास, चलें हम ये भी ग्रांट कर लेते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हम गलत कर रहे हैं, आप ठीक कर लें, तो आप वो चीज़ ठीक करें जिसका आपको ग्रीवेंस था. आपने तो पूरे सिस्टम को आपने टच किया. Why did you, if you look at it, देखें चीज़ों को एकदम से सारी की सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करना पॉलिसी वाइज भी गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, उनका देखिए उनके पास पावर है, लेकिन उस पावर को आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपने देखना होता है ना. एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ फुल सुप्रीम कोर्ट, इट्स एन एस्टैब्लिशमेंट, इट्स अ टाइटैनिक, यू कांट जस्ट टर्न इट अराउंड के इस तरह आप टर्न करें. आप स्टार्ट करें, एक छोटी चीज़ दें, बोले चलें 184(3) को, और दूसरा है 186 जिसमें अपील नहीं है, रेफरेंस आ जाता है. आप उस पे स्टार्ट करें, देखें हम कैसे, हम नई चीज़ होएगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम करेंगे. अगर ठीक नहीं चल रही फिर आप औरों के लिए शायद हम खुद उन चीज़ों में आ जाएं. आप देखें आपने तो इवन एन एप्लीकेशन, कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन भी आया, उसके लिए भी आपने 3 लोगों को वहाँ कर दिया. तो थोड़ी ये पार्लियामेंट को भी देखना चाहिए, अगर गलतियां यहाँ पे भी हैं तो उधर भी देखना चाहिए कि जब आप चीज़ कर रहे हैं तो आप किस एक्सटेंट तक जाते हैं. ठीक. नाउ प्लीज कैरी ऑन विथ योर आर्गुमेंट्स. My lord's observation. एजे साहब, अगर आप इसको इस तरह नजर में देखें कि रूल्स आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. जब 80 के रूल्स बने, लॉ नहीं था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं बताया कि हु विल कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस, तो ये क्या जरूरत महसूस हुई कि अब आपको याद आया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि न तो कॉन्स्टिट्यूशन में था न उससे पहले कोई लॉ था. रूल में तो हमने दे दिए, लेकिन रूल मस्ट बी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. क्या वो जो रूल्स में बताया गया कि चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है गिविंग पावर टू द चीफ जस्टिस और टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो बेंचेस बनाने का इख्तियार किसी एक शख्स या फर्द वाहिद को दे? Nothing on this matter in the constitution. आप कहते हैं कि ये लॉ जब आया, नाउ सब्जेक्ट टू दिस लॉ बेंचेस इस तरह कॉन्स्टिट्यूट होंगे. The constitution does not obviously deal with the subject matter, at least to the extent of sections 2, 3 and 4. Obviously the constitution does not provide any procedure in that sense. So my lord, I'd just move on to now the question of whether the conventions, because there was a question that because of the convention, because the long-standing history behind the Chief Justice being masters of roster in the Indian subcontinent starting 1861 and so on, therefore it has the same status as that of constitutional provision as held in Malik Asad's case, and therefore this act was ultra vires. This is a submission which was made, and my Lord Justice Munib Akhtar also had Can I just ask a question out of curiosity? On this or something else? Related to this, that there's a lot of emphasis on the rule-making power and the rules saying that the Chief Justice will constitute the benches, which necessitated the formation of this committee.
So does that mean that the rest of the rules are all right and nobody has any issue with them? There's no need for any interference. There's no delay being caused because of those rules. There's no need for anything extra. Everything else is fine. It's just this one particular rule that is bothersome, and that is what is coming out of this discussion. Because as was mentioned yesterday, even to the extent of who will call a full court, it's not in the constitution, it's not in the rules. There's ambiguity, and there's been a lot of discussion about how a full court has not been called. Even you didn't think that that was also something necessary to regulate? I'm just trying to understand that where did this emanate out of? Only one issue has been highlighted in the entire set of rules. Not just one. I mean, the non-fixation of applications where urgency is not. I mean, it takes months at end. The matter doesn't get fixed. You know, I can tell you from my experience at the bar. I mean, we file applications for early hearing every month. And, you know, there have been instances I had pointed out, people in jail appeals, when they came up for hearing, people had already been executed. This court acknowledged it. So it is not that, you know, there is this act only addresses the question of master of roster. There are other aspects also. The provisions of this act are mandatory or directory? No, it has a mandatory effect. It has a mandatory effect. So if something that these rules, this act requires the Supreme Court to do, and for some reason it is not done, what is the consequence? Consequence may be considered at the relevant time. That is one. Please answer the question. That is one. And two. नहीं देखिए बहुत से कानूनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अब हम कोई एटी का केस उठा के बाहर तो नहीं फेंक देते हैं कि जी उनने एक मियाद लिखी हुई है कानून ने कि उधर जाएं, तो वो हमें हर चीज़ देखना होगी कि डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंटली वो पर्टिकुलर केस कैसा है, हम जनरल ब्रॉड पैरामीटर्स कर दें. तो मेरे ख्याल में अगर इसमें मैं सिर्फ जो पॉइंट लास्ट डेट पे आपको कहा था उसमें अगर पार्लियामान चाहती तो एक कदम ज़्यादा जा सकती थी. वो कदम उन्होंने उठाया नहीं, और शायद इसलिए नहीं उठाया कि उनको हम पे एतबार है कि इसको हम खुद कैसे चलाएंगे. ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि अब हम कहते हैं मैंडेटरी, आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैंडेटरी, तो उसका कोई इसमें तो तस्करा ऐसा हो नहीं रहा है ना, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे हैं. तो रूल्स ऑफ जितने इंटरप्रिटेशन है वो तो आपके खिलाफ जाते हैं. बट ये कह करके कि डायरेक्टरी और ये कानून का कोई मकसद ही नहीं है, ये भी शायद गलत हो. तो हमें देखें, एक इदारे को दूसरे इदारे की इज्जत करना चाहिए. यकीनन मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी कि भाई ये कानून तो हमने बना दिया है, मगर इसमें आपको उस तरह से मैंडेटरी में पाबंद नहीं किया है. अब आप की भी दानिश है, आप लोगों की अकल और सोच है, आप देखेंगे कैसे चलता है. हो सकता है इसके अलावा भी रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़े. तो वो मेरे ख्याल में अगर हर चीज़ का हम आज ही जवाब दे दें तो कल हमारे पास जो केसेस आ जाएंगे एक्चुअल केसेस, तो वो फिर तो हम पाबंद होंगे अपनी इंटरप्रिटेशन से. रूल्स के अंदर आपने ये एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज किया हुआ है. ऑर्डर 11 बिगिंस विद by saying save as otherwise provided by law. तो ये आपकी acknowledgement है full court की उन rules के अंदर कि अगर कानून कुछ कह रहा है तो आप उसको. What's the response of the federation, official response of the federation? You're the chief law officer of the federation. To the question that I just asked. What's your official response to that? My lord, if the Supreme Court chooses not to follow the law or not to bring its rule in line with the law, will it not be a violation of the We will pray. violation of oath? your oath actually requires you to act in accordance with the Constitution and the law. So I think we would be going into that territory. Mr. Attorney General, please read para 2, section 2, subsection 2 of this act. Yes, Ji, sir. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including. Ji. procedure still has to be framed by the committee in view of the full court, because all matters are mentioned in
Section 2. My lord, कमेटी ने मेरी दानिश में प्रोसीजर तो कमेटी ही बनाएगी ना। कमेटी ने मेरी दानिश में पहले बात सुन लें। माय लॉर्ड, आप मेरी भी जरा सुनेंगे तो मैं जरा बात एक्सप्लेन कर सकूंगा। कमेटी ने मेरी दानिश में, क्योंकि सवाल मैंने समझ लिया था, कमेटी ने ये नहीं करना कि बाकी प्रोसीजर को टच करना है। कमेटी ने ये करना है कि हमने मिलना कब है, जुमे को मिलना है, हफ्ते को मिलना है, कॉज लिस्ट बनानी है, किस कैटेगरी के केसेस कहाँ जाने हैं। दिस इज टू माय माइंड व्हाट द कमिटी इज। रूल्स में भी यही कुछ है और क्या है रूल्स में? यही कुछ है। रूल्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दीजिएगा ये प्रोसीजर जो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस प्रोसीजर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कमिटी और द सुप्रीम कोर्ट। कमेटी सर, कमेटी ने फंक्शन करना है। इट्स मोर देन वन पीपल हु आर गोइंग टू मीट, सो दे वांट टू वर्क आउट देयर सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमिन इट्स मीटिंग्स, इट्स बेंचेस। सो वो जो आपने देखिए, अब देखिए वी आर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द चैलेंज। The scope of the challenge is that this law is unconstitutional. Now we are going into how we will interpret, and I don't want to observe anything in the whichever judgment is delivered, how, if the law is upheld, how it is to be. That is up to, at the relevant time, appropriate body, whether it's a full court, whether it's a committee. We will certainly not accept or even consider what you say. We will determine that ourselves. Yes. So let's not go into uncharted waters. Simply an attack has been launched on the Act on its basis of its constitutionality, how it will work, whether it's functional, whether it's unworkable. It may require additional input from the committee or from the full court, are matters which I don't think we want to hear even from you, because we're not asking assistance. If a problem arises in a case, it may come, we may issue you notice under Order 27 to come and please assist us on that score. So let's restrict the scope of this thing. And I think the fundamental point जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं, वो दुनिया जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, एंटेगनिस्टिक नहीं चलती है। ये जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है, और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं। तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं कि नहीं मेरा इख्तियार और तुम्हारा इख्तियार। ये दुनिया चलती है ना, उनके बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज हैं, लोगों के हकूक़ हैं, हम इस बारीकियों में फंस गए, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस इस ऐसी बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें? हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया, भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में, पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। और अब इसकी बस हम देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखना है, बस इतनी सी बात है। अब हम वो इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करेंगे? भाई हमारी मर्जी है, अब वो वक्त आएगा कर लेंगे इंटरप्रिटेशन। थोड़ी बहुत अकल समझ है, 40 साल से ज़्यादा वाबस्तगी है कानून से, कुछ ना कुछ समझ आ गई है, तो अब हर चीज़ हम लिख दें कि ये मसला आएगा तो हम यूँ करेंगे और ये मसला आएगा तो यूँ करेंगे, तो फिर तो ना कमेटी की अहमियत रही और ना वो फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उसकी अहमियत रही, क्योंकि अब फुल कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। फिर तो बिल्कुल आपने हमें पाबंद कर दिया और हमें स्ट्रेट जैकेट में डाल दिया। उधर हमें ना ले जाइए, आप सिर्फ फोकस रखिए आइन पे जो अटैक हुआ है। My lord. Grateful. My lord, now to constitutional conventions, if I may begin my submission on that. My lord, my respectful submission is that our constitution in its text does not recognize any convention. It does recognize customs or usages having force of law, but not the conventions. And I say this because conventions in historical sense, Article 8. Article 8 clause 2 and then Article 203C, 203B in federal Sharia courts is clause C, which also uses the phrase customs or using having force of law. I'll come to that in due course. What are those customs or usages which have force of law? I refer to a statute of 1872. My lord, the conventions are a feature of an unwritten constitution, which is that of the United Kingdom. It is acknowledged by the English courts that the conventions may be
the reasons for having those conventions or acting upon those conventions may be so strong that not acting upon them might elicit response from the people. But the conventions by themselves do not abridge the Parliament's power to legislate to the contrary. And if so done, the courts cannot hold them unconstitutional. There are two judgments to the contrary what I am submitting. In Al-Jihad Trust case, this court held that they do attain a status of law and are enforceable by the courts. And in Malik Asad, they go a step further and say that conventions established over a period of time have the same status as that of a constitutional provision. My lords, and with the benefit of addressing the full court and those judgments not having the binding effect, if I may take your lordships to the critique of the two judgments by late Justice Fazil Karim in his book titled Judicial Review of Public Actions, Second Review, Volume 1. I'll place the copies. The Judicial Review of Public Actions. What edition is this? My lord, this is second edition. I think he was one of the finest writers of Pakistan law. Each book is, I've always gained a lot from reading Justice Fazil Karim's books. Page 95. This is volume 1, my lord, page 95. I placed photocopies of the relevant pages for your lordship. Page 95. His skill was to explain complicated things simply. Absolutely. 95. 95 now towards the bottom, my lord. The last paragraph, but I'd start with the last, the second sentence. It was settled. Page 95, sir. Last line. Ji, last line. 95, last line. It was settled in Federation of Pakistan versus United Sugar Mills Limited, PLD 1997, Supreme Court 397, that the expression law means positive law, that is to say, a formal pronouncement of the will of... इस्लामाबाद में विफाकी काबीना का इजलास जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं।